Hello students, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स में हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं. येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, corresponding angles, alternate interior angles, etc. Today we will go for the questions related to this. In question number 1, we have to prove that in the figure find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. To prove this, we will go for finding x and y. Solution, as it's given that these two angles are linear pair of angles, क्योंकि ये जो एक लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं, इसको दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड दीज टू लाइंस के बिटवीन हमारे पास ये एंगल्स बन रहे हैं. सो 50 प्लस x becomes 180 because of linear pair of angles. To calculate the value of x, 180 minus 50 and 180 minus 50 becomes 30. So the value of x is equals to 30. Next, we will calculate y. As we know that y equals to 130 because these are vertically opposite angle. Transversal line and CD intersect each other. 130 and y are the transversal vertically opposite angles, and as we studied that vertically opposite angles are equal, that means y is equals to 130. So the value of x is 130 and value of y is also 130. Now to show that AB is parallel to CD, x and y are alternate interior angles and these two alternate interior angles are equal. X equals to y, that is equals to 130, and these are alternate interior angle. और हमने जो स्टडी किया था कि ऑलवेज कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है अगर वो इक्वल हो, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू लाइंस एंड द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, then the two lines are parallel to each other, that means AB is parallel to CD. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा. इसमें क्वेश्चन नंबर 2. In this question it's given that in the diagram if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, that means these three lines are parallel to each other, and Y ratio Z is equal to 3:7. Y ratio Z is equals to 3:7. Find x. We have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन, सिंस AB is parallel to EF also, हमने ये कंसिडर किया था कि अगर AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, that means AB is also parallel to EF. Yesterday I told last topic of parallel lines. So उसी के अकॉर्डिंग AB is parallel to EF also. अगर AB parallel है EF के और ये ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है हमें, तो एंगल X is equals to एंगल Z because of alternate interior angle. Alternate interior angle. If according to alternate interior angle x is equals to z, now if x is equals to z, हमें given है y ratio z is equals to 3:7, that let y is equals to 3a and z is equals to 7a. Z is equals to x, that means y is equals to 3a and x is equals to 7a.
according to this question, x plus y is equals to 180 because of interior angle on same side. Are supplementary, so x plus y is equals to 180, but we consider x is equals to 7a, y is equals to 3a, that is equals to 180. That means 10a is equals to 180, a is equals to 18. If we put the value of a, x is equals to 7 into 18, 7 into 18 126, so angle x is equals to 126. If it's given that to calculate y and z also, then we can write the y also. Y is equals to 3 into 18, that is 54, and z is equals to x, that's why it is 126. इसने only x calculate करने को कहा था, that is equals to 126 degree. Is the answer of question number 2. Question number 3. In the diagram, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD means EF and CD makes the 90 degree angle. And GED, this complete angle is 126. Find AGE, this angle we have to calculate. Then GEF, this angle we have to calculate. And FGE, that means we will calculate FGE, this angle. ये 3 एंगल्स हमें 3 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं. इनको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, since it's given that AB is parallel to CD, that means GE is transversal. If it is transversal, then angle AGE equals to angle GED because of alternate interior angle. If it is alternate interior angle, it's given that GED is equals to 126. That means angle AGE is equals to 126. The first answer or first solution of our discussion. Second part, GEF. As we know that angle GED is equals to angle GEF plus angle FED, यानी ये जो कंप्लीट एंगल है वो इन दोनों का सम है और हमें ये कैलकुलेट करना है. ये हमें गिवन है 126, ये हमें कैलकुलेट करना है GEF, ये हमें गिवन है 90 डिग्री. So angle GEF equals to 126 minus 90, it becomes 36 degree. So angle GEF is equals to 36 degree is the answer of second part of this question. Third one, calculate angle FGE. अब FGE कैलकुलेट करने के लिए एंगल AGE plus angle FGE are supplementary because of linear pair of angles. ये एक ही लाइन पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम ऑलवेज 180 होगा. दैट्स वाई एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट एंगल AGE हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 126 प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180. So angle FGE equals to 180 minus 126, it is 54. So angle FGE is 54 degree. Our question. तो इस तरह से ये 3 वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी थी. तीनों वैल्यूज़ हमने अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल लाइन एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये प्रूफ हो जाएंगे.
Question number 4. It's given that PQ is parallel to ST. This line PQ, it's parallel to ST, and angle PQR is equals to 110. Angle RST is equals to 130. Then find angle QRS. We have to find this angle. इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम इसमें लेके चलते हैं. अगर कंस्ट्रक्शन नहीं भी करना चाहें देन आल्सो वी कैन प्रूव इट बाय अनदर मेथड. वो मेथड कुछ इस फॉर्म में होगा, एक्सटेंड PQ. इफ वी एक्सटेंड द लाइन PQ, we'll give the point, name of this point is PQRSTU. Now we can find extend PQ, that is our construction part. Now we can find the angle RQU. As we know that these two angles are linear pair of angles. अगर linear pair of angles है तो एंगल इन दोनों का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे. और अगर इन दोनों का सम 180 होगा सो हम 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करते हुए इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस एंगल इज 70 डिग्री. नेक्स्ट, एज वी नो दैट PQ एंड ST आर पैरेलल. इफ दीज टू आर पैरेलल, अगर हम इसको V पॉइंट सपोज कर लें तो ये एंगल और ये एंगल भी सप्लीमेंट्री होंगे. इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है. सो वी विल कंसिडर इट एज, सिंस PQ is parallel to ST, that means UV is also parallel to ST, and if UV is parallel to ST, that means angle TSU plus angle SUV equals to 180. So angle SUV equals to 180 minus 130, that is 50 degree. ये एंगल हमारे पास 50 हो जाएगा. इफ इट इज 50, ये भी 50 हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. एंगल QUR equals to 50 degree because of vertically opposite angle. Now QUR इज ए ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर ये 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स हमें गिवन है. 2 एंगल्स अगर गिवन है तो थर्ड एंगल जो होगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा. सो एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 minus 70 minus 50, that is 60 degree. Our answer according to the triangle. Or another method, हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. नो नीड टू सॉल्व दिस वे. अगर आप इस मेथड से नहीं सॉल्व करना चाहते तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको. इट्स द डायग्राम, जो हमें डायग्राम गिवन है. अब दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा. ST PQ R. हम R से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. इसका नेम दे देते हैं AB. दिस लाइन इज A and B, AB. नाउ इट्स गिवन दैट PQ is parallel to ST and we construct a AB through R which is parallel to PQ and ST both. ये गिवन हमें 110, ये गिवन है हमें 130. तो ये जो एंगल होगा एंगल ARQ, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. If these are supplementary angles, then 110 minus 180 minus 110, that is 70 degree. ये एंगल जो होगा वो भी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं देन BRS equals to 180 minus 130, that is 50 degree.
और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए हमारे पास तीनों के तीनों, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट एंगल्स बन सकते हैं हमारे पास, तीनों का सम 180 होगा। दैट्स वाई एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 माइनस 50, दैट इज 60 डिग्री। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे यू कैन यूज और सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट मेथड। Question number 5. In the diagram, AB is parallel to CD and angle APQ equals to 50 degree and PRD is equals to 127 degree. Then find X and Y. To calculate X and Y, as we know that angle APR is equals to angle PRD and it's given as 127 because alternate interior angle. But angle APR is equals to angle APC plus Y. 127 is equals to 50 plus Y. Value of Y is 127 minus 50, 77 degree. In the next step, to calculate X, it's given that AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, then angle APC is equals to X because of alternate interior angle. If it is alternate interior angle and APC is equals to X, that means X is equals to 50 degree. आंसर है ये हमारा। X and Y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, both the values we calculated. Last question of exercise 6.2. It's given that in the diagram 6.33 PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other. That means PQ and RS are two mirrors which are placed each other parallel. An incident ray AB is an incident ray, strikes the mirror PQ at B and reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. It's reflect back again CD. We have to prove that AB is parallel to CD. To prove this, we construct normals to point B and C. Let BM and CN are the normals. BM and CN are normal. As we know in प्लेन मिरर, जब भी हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं, नॉर्मल्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. दैट मीन्स BM is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS. But PQ and RS are parallel. That means BM and CN are also parallel. Because अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है हमारे पास, ये भी 90 डिग्री एंगल है वर्टिकली. ये हमारे पास जो है दोनों लाइंस हमारे पास, इसको अगर हम कंसीडर करके चलें तो ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड या वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड्स बन जाएंगे, जिसके कारण ये दोनों लाइंस भी पैरेलल बन जाएंगी हमारे पास. BM इज पैरेलल टू CN. नाउ एक और पार्ट आपने साइंस के अंदर स्टडी किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मिरर पर जब कोई भी रे स्ट्राइक करती है या इंसिडेंट रेज होती है एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे मेक्स इक्वल एंगल विद नॉर्मल. ये ऑलवेज एक प्लेन मिरर की कंडीशन हम कर रहे हैं कि इफ ऑन द प्लेन मिरर एनी रे स्ट्राइक्स ऑन मिरर
and reflects from mirror, then incident angle and reflected angle are always equal. That means angle ABM is equals to angle MBC because of incident angle and इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल. ये आपने साइंस के अंदर स्टडी किया हुआ है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल. सिमिलरली एंगल BCN इज इक्वल्स टू एंगल NCD. ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है. नाउ दिस इज ए रिफ्लेक्टेड एंगल. Incident angle and reflected angle are always equal, so BCN and NCD are also equal. But BM is parallel to CN. अगर BM parallel है CN के तो हमारे पास जो BC है that is a transversal, and if it is a transversal then angle MBC is equals to angle NCB. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, एंड वी प्रूव्ड दैट दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल. अगर इनका 2 टाइम्स कर दें तो भी इक्वल आएंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल MBC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल NCB. और ये दोनों इक्वल होने के कारण हमारे पास एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD आ जाएगा. इफ दिस कंप्लीट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, दैट मीन्स alternate interior angles are equal, and if alternate interior angles are equal then AB is parallel to CD. ये हमारे पास इसमें प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. So by this we completed our exercise number 6.2. If you have any doubt then you can write in comment box also. Try to solve these questions with example. If you have doubt in example then also you can write in comment box. I will solve it. And subscribe my channel, like my channel and share my channel so that other one also get the help from these videos. Thank you.